Visible? Yes, sir. Okay. So नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. अब सस्टेनेबिलिटी का जो फंक्शन है एग्रीकल्चर को लेके वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा न्यूज में रहता है. उसमें हमारे दो चार चीजें चल रही हैं. एक तो जो फूड चेन के लेवल पे सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न है, क्योंकि जैसे जैसे हम जीएमओ के पास स्विच करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस है और सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं. बट उससे एक साथ में ट्रबल ये होगा कि वो आगे जाके फूड चेन को कैसे इफेक्ट करेगा, वी डोंट नो, वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली प्रिडिक्ट दैट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फूड, अब जैसे इंडिया में तो हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक बीटी कॉटन है और एक रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की वैरायटी हमने वर्कआउट की. तो लेकिन ये मस्टर्ड के केस में डेफिनेटली देयर माइट बी अ क्वेश्चन ऑन द सेफ्टी ऑफ जीएमओ एंड सो ऑन. बट एटलीस्ट एक चीज अच्छा है इस बार कि ये अभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके द्वारा बनाया गया, इंडियन फर्म्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने बनाया. पहले जब हमारे पास बीटी कॉटन आता था तो दैट वाज डेवलप्ड बाय मॉन्सेंटो, एंड वहां पे थोड़ा सा ग्रीडफ्लेशन का कॉन्सेप्ट रहता है. टाइम टू टाइम जो जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, so they always try and do this, they would want to profiteer from whatever possible. तो बीटी कॉटन में वो डेफिनेटली एक ट्रबल रहा. तो यहाँ पे अब अगर हम जीएमओ एटलीस्ट इंडियन वर्जन ला रहे हैं तो अगर उसमें कुछ ट्रबल आएगी भी आने वाले समय में फूड चेन में या कहीं पे भी, तो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विल बी एबल टू वर्क इट आउट. अगर कोई पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही बाहर से आ रही है तो हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे. दैट विल बी द कंसर्न. तो ये एक फूड चेन को लेके सस्टेनेबिलिटी का इशू है. दूसरा इशू है क्लाइमेट चेंज के चलते जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर. एग्रीकल्चर इज ऑलवेज वाटर डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन. अब इंडिया में हमारे पास ऑलमोस्ट 50% इरिगेशन है, 50% मानसून डिपेंडेंस है. और ये मानसून बहुत इराटिक है, टेम्पोरली भी और रीजनली भी. अब इराटिक मानसून की वजह से कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश है और कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है. कभी कभी एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश है और बाकी सारा जगह सूखा रहेगा. तो इसकी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि whatever water is available we have to manage it properly. In that management 2-3 areas are there. First area is efficiency of usage. So या कह लीजिए कि वाटर प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप इरिगेशन, तो ये वाले सारे टेक्निक्स का वर्कआउट करना, उनके बारे में बताना जरूरी है. दूसरा है कंजर्वेशन. सो कंजर्वेशन इन द सेंस, one is recharging groundwaters, second is construction of dams, ponds, lakes, so that is water conservation, and moreover wetland conservation also. तो वो वाली जो एरियाज हैं वो यहाँ पे जुड़ते हैं. तीसरा जो मैनेजमेंट में एरिया आता है वो आता है एम्बैंकमेंट, जैसे स्ट्रॉन्ग करना या डिजास्टर मिटिगेशन. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल. अभी आप देख ही रहे हो पंजाब हर जगह जो सिचुएशन है, so that is disaster mitigation has to happen. जो रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करना, स्ट्रेंथन करना, ताकि वो कंटेन्ड रहे, उसका फ्लो मैनेजेबल रहे. So that is the disaster mitigation, because sometimes because of the erratic nature of monsoon these kind of things are bound to happen. So that is water. Then third area that needs to work upon the sustainable aspect of agriculture is the seed. So as far as the seed is concerned, it's called as harbinger of technology in agriculture. I hope आप नोट कर रहे हो. Harbinger of technology in agriculture. So here एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो सीड्स हैं ही हैं, बट आमतौर पे हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ सीड्स आते हैं. जैसे ब्रीडर सीड आता है ना. फिर उसके बाद आगे नए नए वेरिएंट्स हैं. अब ये सारे जो वेरिएंट्स हैं इनका क्वालिटी कंट्रोल एक मेजर कंसर्न रहता है. और इंडिया में although there is a seed act but it is a outdated legislation, 60s का है. तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्राइवेटाइजेशन के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जो लॉ है, द पॉलिसी गवर्निंग सीड, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. तो एक इसमें और चीज होती है सीड रिप्लेसमेंट रेशो, दैट शुड बी समवेयर नियर 1/3. मतलब अगर मेरे पास 3 एकड़ जमीन है तो मुझे हर साल 1 एकड़ के नए सीड डालने.
इससे 24% के आसपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ जाती है। तो इंडिया में ये सीड रिप्लेसमेंट रेशियो भी आइडियल नहीं है, अभी इसको अचीव करने की जरूरत है। तो सीड को लेके ये 2-4 बेसिक सी चीजें। Okay, then fourth aspect in sustainable agriculture is your fertilizer. Now, as far as fertilizer is concerned, we have a nutrient subsidy scheme NPK, लेकिन हमें सबको मालूम है NPK का रेशियो इंडिया में हिला हुआ है, नाइट्रोजन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, फॉस्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइजर कम यूज करते हैं। अब इसमें बेसिक मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की है कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर की दी जाती है उसको सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ इंटीग्रेटेड सब्सिडी देने की कोशिश की जाए। ऐसा पायलट बेसिस पे कहीं कहीं ट्राई किया है, लेकिन अभी पैन इंडिया नहीं है, लेकिन ये करने की जरूरत है। एसेंशियली आपको उसी न्यूट्रिएंट के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, दैट इज अ सजेशन, आपने इसी तरह से कोट करना है। आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के अकॉर्डिंगली आपको उस चीज के लिए सब्सिडी मिलेगी जो आपकी सॉइल में कम है। अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है तो नाइट्रोजन पे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो धीरे धीरे हम इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इसका मैकेनिज्म अभी तैयार हो रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड सब्सिडी को हम धीरे धीरे डायरेक्टली टू फार्मर डीबीटी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक क्या होता है, इट इज गिवन एज अ प्रोडक्शन सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो प्रोडक्शन सब्सिडी से इसको प्रोडक्ट सब्सिडी में शिफ्ट करना है और उसको डीबीटी के थ्रू देना है। तो अभी ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली चल रही हैं फर्टिलाइजर के केस में, बट देन दे नीड टू बी कनेक्टेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड। राइट नाउ द थिंग इज ओनली अवेयरनेस जनरेशन, कि फार्मर अपने सॉइल को लेके अवेयर हो जाए और 3 साल तक वो वैलिड रहता है कि उस हिसाब से मैं फर्टिलाइजर ऐड करूं। ठीक है, लेकिन वो अवेयरनेस जनरेशन इंडिया में काम नहीं करती। जब तक किसी चीज पे ज्यादा सब्सिडी है उसकी ओवर यूटिलाइजेशन होनी है अननेसेसरी। उनको समझ तो आती नहीं टेक्निकली, तो सब्सिडी देनी ही उस चीज पे बंद करनी पड़ेगी, फिर जाके धीरे धीरे उसको रैशनलाइज कर पाओगे आप। सो आपने इसको सीधा नहीं कहना कि सब्सिडी शुड बी स्टॉप्ड, यू हैव टू से रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉइल as indicated by the soil health card of an individual farmer. तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सब्सिडी मिलेगी, बाकियों पे नहीं मिलेगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये आप चाहे पीओएस के बेसिस पे, पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस पे इंटीग्रेट कर लो, चाहे कैसे भी करो। दूसरा इसमें इशू आ रहा है बायो फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते। तो बायो फर्टिलाइजर के अंदर क्या है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रीन रेवोल्यूशन से यूज कर रहे हैं, तो और उसमें ट्रबल ये होता है कि लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर हैपेंस इनटू द सॉइल, इनटू द वाटर बॉडीज एक्स्ट्रा, एंड दैट लीड्स टू ट्रबल्स लाइक यूट्रोफिकेशन, that leads to troubles like biomagnification of various diseases, various chemicals and so on. So इस वजह से उससे बचने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, बट बायो फर्टिलाइजर में भी इंडिया अभी डिमांड सप्लाई रेशियो को ठीक से मैच नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट हम किसी भी फर्टिलाइजर के लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इंडिया में, हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस करनी पड़ रही है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में ऑलरेडी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, और ये इंपोर्ट डिपेंडेंस बायो फर्टिलाइजर तक एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में। खुद के बनाओ बायो फर्टिलाइजर, वही एक मेजर मिशन होना चाहिए। देन सेम गोज विद पेस्टिसाइड्स। So as far as pesticides are concerned, here we are now switching to the biopesticides. So that is utilizing the food chain itself to deal with the insect. But this is not well developed, although integrated farming systems के अंदर हमने इसको कोशिश तो किया है, लेकिन अभी ये चला नहीं बहुत अच्छे से। इंडिया में इसका चलन अभी शुरू होगा। पेस्टिसाइड की सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी है ना, वो ऐसी फसलों में हो रही है जहां पे जैसे राइस में ज्यादा पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम नहीं आती। कारण क्या है, वाटर लॉग्ड फील्ड्स होती हैं, तो वहां पे पेस्ट जैसे कि माउस एंड ऑल दे आर नॉट देयर। वाटर लॉग्ड फील्ड होंगी तो वो भाग जाएंगे वहां से पेस्ट वैसे भी। ठीक है, व्हीट में, कॉटन में, यहाँ पे पेस्टिसाइड की सफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है, और इनफैक्ट पंजाब में और हर जगह जहाँ पे भी व्हीट बेस्ड फार्मिंग है या कॉटन बेस्ड फार्मिंग है, उधर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो दैट इज देयर। ये अब बायो पेस्टिसाइड पे स्विच करने की जरूरत है और इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर लेके आने की जरूरत है। देन इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो वो भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। एक सस्टेनेबिलिटी इनकम के एंगल से होती है, एक बायोलॉजी के एंगल से होती है ना।
तो इकोनॉमिक्स के एंगल से देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रोफॉरेस्ट्री या जो भी है, जब तक इनकी सप्लाई चेन ठीक नहीं होती तब तक बात नहीं बनती। इन चीजों की ब्रांडिंग, अवेयरनेस जनरेशन, उसके बेसिस पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर द फार्मर कैन बी जनरेटेड कि वो अट्रैक्टिव ऑप्शन लगे। अभी वो नहीं लग रहा, ठीक है। फिर इसके अलावा हॉर्टिकल्चर मिशन वगैरह तो है ही है, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल इज नॉट ओनली पार्ट इन बायोलॉजी, it is also something we have to see from economics. It is also something that we have to see from geography, and it is also something we have to see from culture. So from many areas, we have to work upon the sustainability of agriculture. Looking at sustainability of agriculture from just one lens will not do. I hope it is clear. Hello, hello. Manny, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Okay. Fine. Moving on. So centrally sponsored schemes such as National Mission for Sustainable Agriculture is one of the 8 missions under the National Action Plan on Climate Change. ये बहुत देर से चल रहा है, NAPCC, and aims at promoting sustainable agriculture by developing appropriate adaptation strategies and dimensions. Now, during the 12th 5-year plan, उस टाइम पे हम सोच रहे थे कि 3-4% एग्रीकल्चरल ग्रोथ आ जाए, बहुत है, 4% was the target. These strategies dimensions were embedded and mainstreamed into missions, program schemes of the Department of Agriculture and Farmer Welfare through a process of restructuring and convergence. Now, NMSA, as a programmatic intervention made operational from 2014-15, aims at making agriculture more productive, sustainable, remunerative, and climate resilient. ये 4 चीजें हम आज एग्रीकल्चर में चाहते हैं। ये हमारा मिशन मोड है, ये नोट कर लेना मेंस के लिए। What do you want the direction of agriculture to be? Productive, sustainable, remunerative, and climate resilient. कभी भी आपको एग्रीकल्चर को लेके कुछ क्वेश्चन लिखना है तो ये 4 वर्ड वहां पे डालने हैं, ठीक है। तो बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कॉम्पोजिट फार्मिंग सिस्टम, अब क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? इन 4 चीजों के लिए व्हाट आर द एक्चुअल डूएबल्स एट द ग्राउंड लेवल? So next, soil and moisture conservation measures, comprehensive soil health management, efficient water management practices, mainstreaming rain-fed technologies. Okay. Now, it aims to promote sustainable agriculture through thrust in enhancing agricultural productivity, especially in rain-fed areas, focusing on integrated farming, soil health management, synergizing resource conservation. Basically, ऊपर वाले पॉइंट को घुमा के दोबारा लिखा है, कुछ नया नहीं। From 2018-19, NMSA was being implemented as a sub-mission and sub-umbrella mission. So sub-umbrella mission कहने का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। Under Green Revolution कृष्योन्नति योजना, तो ये 2018-19 में शुरू किया था। From 2022-23, various program schemes of NMSA have been subsumed under राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये 2012 से चलती आ रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। So as an annual action based program, मतलब हर साल इसका एक अलग एक्शन पार्ट्स आ जाते हैं कि हम ये करेंगे इस साल, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहेगा। Now on किन किन चीजों पे काम होगा? So the centrally sponsored and central sector schemes, मतलब जहां पे 100% भी हो सकता है और सेंट्रल स्टेट मिलके भी कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, subsumed as per drop more crop after the launch of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 2015-16, now subsumed under RKVY cafeteria approach. Cafeteria approach means cafeteria क्या होता है? उसमें सब कुछ है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप खा पी भी सकते हो, बैठ के घूम फिर भी सकते हो उसके अंदर, तो दैट इज कैफेटेरिया अप्रोच, एवरीथिंग टुगेदर। ओके, सो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट इसका एक मेजर कंपोनेंट होता था, उसको अभी पर क्रॉप मोर क्रॉप के अंदर ले लिया गया। देन रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, एसेंशियली जहां पे रेन ज्यादा है उस तरह की प्लांटेशन वहां पे की जाए, सबस्यूम्ड अंडर RKVY कैफेटेरिया अप्रोच। देन सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, नेशनल बैम्बू मिशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग,
Soil and Land Use Survey of India, National Rainfed Authority, Mission Agriculture Value Chain Development in Northeast Region, तो MOVC. जब सिक्किम ने फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट किया तो तब से ये मिशन चल रहा है. नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंट्रल फर्टिलाइजर quality control and training institute. So there are so many things which are working in the National Mission on Sustainable Agriculture in one mission. Now, what's the situation with the rain-fed farming systems? Now, food grain production in the country accrues from approximately 140 million hectares of net area sown. 139 याद रह जाए तो भी चलेगा. Of this, about 70 million hectares is net irrigated and remaining is rain-fed. So half of it, 50-50, ऐसे लगा लो. Rain-fed agriculture is complex, diverse, risk-prone, characterized by low levels of productivity and low input usage. So if managed properly, they have the potential to contribute to a larger share in overall production of the food grain in the country. In view of this, the government of India has accorded a very high priority to the holistic and sustainable development of rain-fed areas. तो इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं. अभी क्या चल रहा है इसके अंदर देखिए. In this context, RFS division implementing the per drop more crop component and rain-fed area development component of NMSA. तो दोनों इकट्ठे कर दिए. अभी इसमें एक्चुअल में क्या करेंगे? Besides a dedicated micro irrigation fund has been instituted by NABARD with the corpus of rupees 5,000 crore. So micro irrigation adopt करने के लिए, that is sprinkler systems, drip irrigation and all that. तो उसके लिए एक fund generate किया है. Okay. Now the coverage will be expanded and doubled to 10,000 crore rupees in coming time. Per drop more crop component, इसमें क्या कर रहे हैं? Water use efficiency के ऊपर टारगेट कर रहे हैं. बस इतना याद रखना. माइक्रो इरिगेशन फंड 2017-18 के बजट में आया था, तो उसमें हम बेसिकली लोगों को फंडिंग में हेल्प करेंगे टू अडॉप्ट माइक्रो इरिगेशन कंपोनेंट्स. इतना याद रखना है, पूरा इसका डिटेल में नहीं जाना. देन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD. So basically we are trying to manage it better. How? Come to this. So the things will be done through integrated farming system which focuses on multiple cropping, rotational cropping, intercropping, mixed cropping practices with allied activities such as horticulture, livestock, fishery and apiculture to enable farmer not only in maximizing farm returns for sustainable livelihood but also to mitigate the impact of drought, flood or other extreme weather events. क्योंकि अभी हमने ये तो देखा है कि क्लाइमेट चेंज के साथ धीरे धीरे एक्सट्रीमिटीज बढ़ती जा रही हैं वेदर की. इंडिया में ये फर्स्ट ऐसा ईयर है 40 साल के बाद जब इतनी बारिश नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है. अदरवाइज तो ऐसा था नहीं. अभी एक्सट्रीमिटीज की वजह से ये सारे अलग अलग रिलायंस क्रिएट करने पड़ेंगे. पहले सिर्फ आप क्रॉप बेस्ड कल्टिवेशन कर सकते थे, बट नाउ यू नीड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स. नेक्स्ट, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी नहीं चाहिए, मूव फॉरवर्ड. बैम्बू मिशन नहीं चाहिए, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट या कुछ स्टेट्स के लिए यूटिलाइज है. कम टू दिस वन, अदर इनिशिएटिव्स. Two externally aided projects have been approved for implementing in Northeast region. First is development of bamboo value chain in Northeast. This is by Asian Development Bank. बस इतना याद रखना है. फिर है India-Japan Initiative for Sustainable Development of the Bamboo Sector. This is supported by the Japanese government through JICA, that is the Japanese Investment Company. जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो वैसे ही जापान का भी इसी तरह से डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल फंडिंग करता है. नाउ NBM with GEM, that is the government e-marketplace, launched a green gold collection, a dedicated bamboo window on government e-marketplace in 2021. Facilitation of marketing model of multifaceted bamboo products. बहुत सारे होते हैं ना, प्राइवेट कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, गवर्नमेंट को भी टारगेट करता है. ओके. देन एक्सपोर्ट के लिए भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर लिफ्टिंग बैन ऑन बैम्बू चारकोल एक्सपोर्ट. एक्चुअली क्या है ना, बैम्बू चारकोल इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग, बट वी आर एक्सपोर्टिंग इट नाउ. ओके.
formation and promotion of FPOs in the bamboo sector. So don't bother, इतना नहीं चाहिए bamboo sector हमें. Submission on agroforestry. So agroforestry अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है कभी-कभी यूपीएससी में. So what is to be done in agroforestry? Let's see. So this was launched for the first time in 2016-17. So to encourage tree plantation on farmland, that is हर मेद पर पेड़. मोदी जी स्लोगन देने में माहिर है. Anyhow, this is ongoing since the National Agroforestry Policy 2014. It's a part and parcel there. Now the scheme was implemented in the states which have liberalized transit regulations for selected tree species. So ऐसा हम नहीं क्रिएट कर रहे अभी कि सारी स्पीशीज ही हर जगह प्लांट कर दें, क्योंकि एक्सोटिक वैरायटीज बाहर से आके कई बार फ्लोरा फौना डिस्टर्ब भी करती हैं. ओके, सो सारे स्टेट्स में नहीं है, 21 स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं. देन एग्रोफॉरेस्ट्री, ये बेसिक्स हैं, ये मीन्स में लिखने के लिए चाहिए होगा आपको. हेल्प्स इन क्रिएटिंग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स एंड हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. दो चीजें वर्कआउट करनी है. Under the mission, multi-purpose tree species with short, medium, and long-term returns are encouraged so that the farmers may get additional income at regular intervals. These would include fruits, fodder, medicinal, and timber species. So all kinds of species are being used in agroforestry. Now, submission has broad objectives. क्या करेंगे? Tree plantation. Then ensure availability of quality planting material. Popularize agroforestry. Create database and information, provide extension and capacity building. Extension means education, awareness about agroforestry. Okay, अब और इसको लेके क्या हो रहा है? तो increase in tree cover leads to sequestration. ये तो सारे वही चीजें हैं जो पीछे आपने पढ़ा. अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है. Come to this funding pattern. The scheme is being implemented with funding of 60-40 between center and state. Northeast के लिए और hilly states के लिए कैसा है? 90-10 and 100% in case of UTs and national level agencies. So this is the funding pattern. That's it. अभी फिजिकली कितने पेड़ लगा दिए एग्रोफॉरेस्ट्री में, क्या हो गया, उसका बस एक दो चीजें वर्कआउट करनी है. कम टू द टेबल दैट दे हैव गिवन इफ दे हैव. So under the scheme right now, 1,61,238 hectares have been brought under the plantation, and that's it. So 1,61,000 hectares, या ऐसे याद रख सकते, 1.61 lakh hectares or lakh hectares. That much you can put. This उतना याद रखिए. कौन से ट्री स्पीशीज लगाए हैं वो ज्यादा टेंशन लेने की वैसे जरूरत है नहीं. ठीक है, तो एक आधा याद रख लो. सैंडलवुड है, बेल है, बस अर्जुन ट्री है, ये शीशम ट्री, जितने भी एक्चुअली कारपेंट्री में यूज हो जाता है ना, फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री में, तो उनको लगाता है आमतौर. तो वो हाई वैल्यू में बिक भी जाता है. ऐसा है कि जैसे अगर सपोज मैं आज 1 एकड़ जमीन ले लूं पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रहेगा, पहाड़ के नीचे ज्यादातर फुट हिल्स में, जहाँ पे सस्ती लैंड भी मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ खास एग्रीकल्चर नहीं होता. तो चंडीगढ़ के आसपास इट इज अवेलेबल समवेयर नियर 10 लाख 20 लाख पर एकड़ ऐसे. उसमें आज मैं पेड़ लगा के छोड़ दूं और 10 साल भूल जाऊं कि मैंने ये जमीन कभी खरीदी थी, उसके बाद जितने की मैंने जमीन खरीदी थी उससे 3 टाइम्स ज्यादा के पेड़ बिक जाएंगे विद इन 10 ईयर्स. ठीक है, तो जमीन आपके पास फिर पड़ी है, फिर लगा दो पेड़. ओके, तो एफडी कराने से ये अच्छा है आजकल. ठीक है. The scheme has been discontinued since April 1st, 2020 as per EFC recommendations. तो अभी हम ये एग्रोफॉरेस्ट्री वाली स्कीम नहीं कर रहे इस बार, तो इट इज फिनिश नाउ. तो जितना कि एग्रोफॉरेस्ट्री के ऊपर काम कर लिया बस उतना बहुत है. रिकमेंडेशंस क्यों ऐसी आ रही हैं कि जब जितना हमारा प्लांटेशन हम ट्री कवर चाहते थे वो उतना अचीव कर लिया हमने, सफिशिएंट है. अब इसके बियॉन्ड हमें एग्रीकल्चर के ऊपर भी तो काम करना है. अब लोग अपने बेसिस पे एग्रोफॉरेस्ट्री ऑलरेडी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं. As far as climate change is concerned, what all is being done? So the National Mission on Sustainable Agriculture is basically a part of NAPCC since 2008, and what we are trying to do is create certain strategies to make Indian agriculture resilient to climate change. और इसको लेके ये सारी strategies हैं.
3 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट. दीज आर द 3 एरियाज ऑन विच इट इज वर्किंग. तो मेंस के लिए ये तीनों याद रखें. ठीक है. अब इन सब के साथ धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वैल्यू चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, एंड जैसे कि सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री. सो ये सारी चीजें लेटर ऑन जोड़ दी गई इसके अंदर. ड्यूरिंग 2015-16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, another one added, per drop more crop, that was added. Then national bamboo mission was added in 2018. So this way slowly things have been adding up for the above 3 objectives only. ठीक है. तो ये वाला पैराग्राफ काम का है. जब भी कभी एक सिंगुलर नोट लिखना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज को लेके इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए. क्वेश्चन लिखिए. डिस्कस द इनिशिएटिव्स taken by government of India, or simply initiatives taken in India to ensure climate resilient agriculture and protect farmers' income. I'm not saying double farmers' income, I'm saying protect farmers' income. ये दोनों इकट्ठे चलते हैं ना. एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस तो है ही, तो इसमें बस बेसिकली इतनी की लाइन जुड़ जाएगी कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. अभी भी 50% ऑफ लेबर फोर्स या इकोनॉमी उस पर डिपेंड करता है. 18% समथिंग ये जीवीए को कंट्रीब्यूट करता है, 18 से 20%. तो इस वजह से इनकी इनकम कंजर्वेशन करना जरूरी है. रूरल डेवलपमेंट के लिए फार्मर इनकम मस्ट बी प्रिजर्व. उसके बाद सारा क्लाइमेट एग्रीकल्चर, ये जो आपने पढ़ा एनएमएस से, इसके बारे में बात करें. ठीक है. तो 250 वर्ड्स 15 मार्क्स आराम से लिख सकते हो. कमिंग फॉरवर्ड, अभी आगे आने वाले एरिया में व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. So implementation strategies are designed with a time frame of up to 2030. 11 key priority areas have been identified for programmatic intervention which can minimize the impact of climate change and reduce risk. What are these areas? So these priority areas have been analyzed in the context of 4 functional areas. 11 में से एक्चुअल में 4 ही हैं. R&D, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड अपस्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये 4 बेसिक एरियाज में सारा काम चलेगा, फंक्शनल एरियाज. उसके 11 डायमेंशंस क्या हैं, तो यहीं से सारा आपका मीन्स का आंसर बनता है. इंप्रूविंग वाटर प्रोडक्टिविटी, पेस्ट सर्वेलेंस, फोर वार्निंग एंड मैनेजमेंट, soil health and nutrient management, energy management and farm mechanization, agri waste management, insurance and risk management, strengthening the value chain, integrated farming system, agroforestry, including bamboo, organic farming, climate ready crop varieties and resilient practices, enhancing resilience in livestock and fisheries. Okay. So if you look at the entire figure, agricultural sustainability के साथ क्या क्या चीजें चाहिए? Soil quality, water, crop yield, environment and livestock. ये 5 dimensions पे काम करना. Mitigation और adaptation दोनों चाहिए. Mitigation means we need to be ready for the future. Adaptation means जो हो गया उसके हिसाब से already change करते रहो अपनी practices. ये एक डायग्राम अपने दिमाग में बिठा लो. ये पेपर में भी बना सकते हो आप, और इसके बेसिस पे ही आपका आंसर अपने आप से बनना. ठीक है. So very good diagram. You should use it for your means answer writing. Okay. Coming forward to soil and land use survey of India. अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीजें हैं सिर्फ उतनी उठानी है हमने कि what is the status of soil and land database. Come to this. So soil and land use survey of India. आप इसको रेफर करके डेटा लिख सकते हो जब भी आप कभी फार्मर्स, फार्म साइज, कैचमेंट एरिया, कितना क्रॉप साइज, वो सब लिखना हो. So for priority categorization, हमारा जो soil and land use characteristics है, 262 मिलियन हेक्टेयर का catchment area है of different river basins in the country.
Similarly, the institute has also accomplished detailed soil survey database generation of 23 million hectares of area in priority sub-micro watersheds, rainfed aspirational districts. So सारा नहीं कर पाएंगे हम ही, अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी 700 में से करीब 332 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तो हम काम कर चुके हैं. ठीक है, इट विल टेक टाइम बिकॉज अभी ये शुरू हुआ है सारी एक्टिविटीज और ये सब सैटेलाइट स्पेस है. So database is being made ready so that we know what kind of moisture level, what kind of soil quality is available where, and what kind of agriculture can be done then. Okay. Am I properly audible, visible? Is anybody having any kind of doubts? No, sir, you are properly audible and visible. ठीक है. अब ये सब डेटा नहीं चाहिए फिर से कहाँ पे क्या चल रहा है. This is just that area in hectares in agricultural land and status means कितना उन्होंने अपना सर्वे कंप्लीट कर लिया, तो वो बता रहे हैं. तो we don't need to. Okay. Soil map अलग अलग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एक्सेट्रा इस तरह से सॉइल मैप्स बना रहे हैं. जस्ट थिंक दैट हाउ वी आर स्टडिंग द सॉइल्स इन इंडिया, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. ये सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस हैं उनको स्टडी कैसे करते हैं. तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, पीएच लेवल्स, नाइट्रोजन, सॉइल सैलिनिटी, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन, सल्फर, मैंगनीज. तो जस्ट दैट वन डेटाबेस दे आर शेयरिंग. नो नीड फॉर यू टू डील विद दिस. जस्ट रिमेंबर सॉइल हेल्थ कार्ड को फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए ऐड करने की जरूरत है. ठीक है, और सब्सिडी उस हिसाब से जानी चाहिए. सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, छोड़ दो उसको, नहीं चाहिए. इंस्टीट्यूशनल वर्कआउट है. अभी हमारी जो वर्कआउट है वो कैसे चलता है देखो, इन सब के ऊपर हम सब्सिडीज देते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. National Center for Organic and Natural Farming. So basically, organic farming, what we are trying to work out with. This is now established at Ghaziabad, and government is implementing a participatory guarantee system in India. करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम आपको प्राइजेस भी एश्योर करेंगे एक तरह से. So as a quality assurance initiative for certification of organic produce that is locally relevant and emphasizing the participation of stakeholders, including producers, farmers, and consumers, and operate outside the frame of third-party certification. Now, in the operation of PGS India, stakeholders are involved in decision-making and essential decisions about the operation of PGS India certification itself by assessing, inspecting, verifying production practices of each other and collectively declare the produce as organic. एक तो है कि आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा बेस्ड अपॉन क्वालिटी कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग एक इंस्टीट्यूट से जाके, थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट. यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स, तो दे आर कमिंग टुगेदर टू गिव ईच अदर अ सर्टिफिकेशन कि हाँ जी जो बन रहा है ऑर्गेनिक है, मैंने खुद देखा जाके. इट्स लाइक दिस. So that is the PGS India certification. ठीक है. Now, PGS India has a number of basic elements to embrace participatory approach, a shared vision, transparency, and trust. Participation is an essential dynamic part of PGS. So, सबको साथ में लेके फिर इंश्योर करना कि हाँ जी वाकई में सब ऑर्गेनिक है और हम ये खरीदेंगे, ये उगाएं. So, we'll help them grow and they will deliver. It's like this. So, we have one group of our own in this case. Let me show you that the practical example of PGS that we have been able to create in the last 4-5 years. अब उसके अंदर क्या है कि we have created a farmhouse near Himshikha, that's near to Pinjore. So उसके अंदर ये सारी चीजें डेवलप की जाती हैं in that group, whatever is organically produced. So there is a bunch of about 250 families, 300 families in Chandigarh itself, and they buy the produce. Yeah, let me show you. So this is belonging to a friend of mine. His name is Pommy. There are two brothers. Both of them are architects. Okay. So let me show you how it really works. इस तरह से जो भी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है उनका, लाइक अनियन, अजवाइन, जो भी होगा वहाँ पे, वेजिटेबल्स जो फार्म में प्रोड्यूस हो रही हैं,
So all of them will be there, okay, for the sale. Group में list आ जाएगी, सब कोई अपने अपने order डाल देंगे. And right now this is a, I look at the participants. So 230 families are there. So this is like a PGS, organically certified, but within the society. So they will help each other out, and people will produce, the other people will buy. It's a trust factor, participative factor that's more important. Okay. Then the learning process is usually hands-on and involves field days or workshops. The idea of participation embodies the principle of collective responsibility for ensuring the organic integrity of the PGS. तो ये सारा ट्रस्ट के ऊपर created aspect है. Okay. So now PGS India program also provides uninterrupted chain of custody, starting from producer groups till the products are processed and finally packed into retail packs, to integrate traditionally organic areas into mainstream organic and harvest the benefit of traditional organic practices. For safe and healthy certified organic food for consumers, PGS India program also provides for a mechanism to certify large contiguous area involving village councils, gram panchayats, by adopting a village-wise conformity assessment on the annual basis. तो हर साल जाके वो चेक कर लेंगे, हाँ जी ये वाले विलेज में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हो रही है, और जितना भी यहाँ से प्रोड्यूस आएगा वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होगा, नॉन जीएमओ होगा, और उसके फिर ज्यादा प्राइजेस मिलेंगे मार्केट में. अब जैसे अनियन की बात कर लो, तो नॉर्मल अनियन यू विल सेल फॉर लाइक 25-30 रुपीज अ केजी, बट ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस विल कॉस्ट यू अराउंड 40 रुपीज अ केजी. बट देन इट्स अ चॉइस, बिकॉज अगर आप पेस्टिसाइड का वर्कआउट करो, आप देखोगे कि पीएच, अगर अल्कलाइन पीएच वाले पानी में आप प्याज को डाल के रख दो, उसमें से पूरा पेस्टिसाइड बाहर आएगा धीरे धीरे. It will create a oily kind of a emulsion. The reason for that is the high amount of pesticides used there. So we don't want to consume that. And major initiatives, revisions in PGS India certification. अभी इसमें क्या latest चल रहा है? So addition of new scopes of individual farmer registration, large area certification, including registration of processors and handlers. So they can be getting the PGS India certification. Then they can sell online anywhere as organic. Otherwise, nahi. Okay. Then overview of proposed natural farming certification system. So what is this? So Director NCO NF Ghaziabad acted as a member secretary for 12 various committees, and the committee has proposed natural farming recognition system and has submitted its report to the Department of Agriculture and Farmer Welfare. तो आगे जाके देखेंगे कि अलग अलग नेचुरल फार्मिंग जो ऑलरेडी कहीं ट्रेडिशनली चल रही है, जैसे ट्राइबल्स कर रहे हैं इधर उधर, उसको NFRS में डाला जाएगा. उससे वो लोग भी अपने प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बोल के अच्छे प्राइसेस में बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. That's that. National skill programs, so they're just training how to do organic farming better. Here it is. NCO NF Ghaziabad has taken initiatives for aligning the targeted human resource development program, such as a 30-day certificate course for organic farming promoter manager of 240 hours duration as per Skill India norms, with the objective to create a trained workforce by targeting unemployed national youth, which can handle the different scopes of Indian organic industry, including production, quality, certification, and marketing. तो अब हम लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि they are certified organic managers, organic produce managers. So that's where we are working on right now. Then training programs just नहीं चाहिए ज़्यादा. Move forward. काम तो बहुत हो रहे, पता नहीं चलता हमें. Come to this परंपरागत कृषि विकास योजना. So government is committed to promote organic farming, emphasize on sustainable productivity, food security and soil health. जब भी organic farming के ऊपर बात आए तो ये तीन चीजें लिखनी होती. What is the emphasis? Sustainable productivity, food security and soil health. ठीक है. Now government has prepared a roadmap for this. तो इसी roadmap के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च किया गया. It is basically a centrally
sponsored scheme. Okay, centrally sponsored program. The ratio is 100% for UTs, 90:10 for Northeast, and 60:40 for all the other states. Now, Paramparagath Krishi Vikas Yojana is implemented in a cluster mode with minimum 20 hectare size, and the states have been asked to implement the cluster size of 1,000 hectare in plain area and 500 hectares in hilly area. बेसिकली क्लस्टर साइज के बेसिस पे ये हो सकता है कि फिर मैनेजमेंट आसान हो जाता है, पॉलिसी सपोर्ट देना आसान हो जाता है. To facilitate marketing of organic produce, all farmers are eligible, but within a group, farmer can avail benefit of maximum of 2 hectares. And the limit of assistance is rupees 50,000 per hectare, out of which 62%, that is about 31,000, is given as incentives to a farmer for organic conversion, organic inputs, on-farm inputs, production infrastructure, etc. And this is to be given directly as direct benefit transfer for about 3 years. ये बहुत अच्छी स्कीम है. अगर सपोज किसी भी जगह पे अब 2 हेक्टेयर्स मैक्सिमम साइज रखने का मतलब क्या है कि स्मॉल फार्मर शुड बेनिफिट. दैट इज वन. आपके पास 10 हेक्टेयर, उसमें से 2 हेक्टेयर में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए. हर हेक्टेयर में आपको 31,000 रुपीज पर हेक्टेयर तो उन्होंने एज इट इज दे दें. ये आपकी इनकम सपोर्ट के लेवल पे है कि आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ना मिले, उतना आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो एक तरह से वहां पे ये यूज करेंगे. मोर ओवर ये कोई ऑर्गेनिक इनपुट्स आप डाल रहे हो जैसे बायोपेस्टिसाइड वगैरह, तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे भी, और कोई प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हो वहां पे भी एक तरह से हेल्प है. उसके अलावा भी असिस्टेंस है, एड ऑन असिस्टेंस भी मिलेगा, सो दैट कैन बी गिवन, बट दिस इज गुड इनफ. इसके बेसिस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है बड़े आराम से. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस मच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करना है जितना हो सके, ऑर्गेनिक इनपुट्स होने चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए. सो बेसिक से कुछ वर्ड्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करने हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? Promote natural resource based integrated and climate resilient sustainable farming systems. One. Second, reduce the cost of agriculture. Abhi jaise zero budget natural farming, this is also a practice related to organic farming only. Then sustainably produce chemical free nutritious food for human consumption. Protect the environment from hazardous inorganic chemicals. To protect the environment, inorganic chemicals, ऐसे note down कर लेना. To empower the farmers through their own institutional development, तो farmers को भी capable बनाएंगे ताकि वो पूरी value chain के अंदर काम कर सकें. In terms of capacity to manage production, processing, value addition, certification management, सब कुछ farmers को सिखाना जरूरी है. To make farmers entrepreneurs, आजकल इनके लिए एक simple word है agripreneurs. So that is what we are using now. Through direct market linkage with local and national markets. So that's it. अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, कैसे काम कर रही है पूरी की पूरी स्कीम, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी देख लीजिए. कभी कभी पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना या जो बाकी की स्कीम्स हैं, हाउ आर दे वर्क? सो दैट इज गिवन राइट हियर. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू write anything if we don't have these facts. So here, total fund released under KVY is about 1750 crore rupees. Just remember that in the last 7 years period. And during this particular year, चाहे एक याद रख लो, दोनों में से एक फिगर याद रखना. So somewhere near 93 crore or 100 crore rupees, you can say. Then how many clusters? So right now, 5670 new clusters covering about 1,13,400 hectares. So that have been utilized for organic farming. फिर बस ये वाले एक दो फैक्ट्स हैं. A dedicated online web portal jaivikkheti.in has been created to encourage organic products, sale of organic products directly by farmers to consumer farming by directly connecting to the consumers. So jaivikkheti.in, it's like an e-commerce platform for organic produce. जहाँ पे आपके एरिया के जो फार्मर्स हैं वो जाके लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे और अपना सामान बेच पाएंगे. ठीक है, ओके. So brand name, this is very important for prelims, not for mains. Mains में आप इसको as a extra input जब भी कभी आ जाए कि हम organic farming को कैसे promote कर रहे हैं, तो वो use कर सकते हैं. So this is
both ways information. तो मध्य प्रदेश में मेड इन मंडला, that is the brand name. उत्तराखंड में we have created organic Uttarakhand. Tamil Nadu, so that is Tamil Nadu organic product. Maharashtra is saying Sahi organic, Nasik organic, Gadchiroliya organic farming. Then Jharkhand में जैविक Jharkhand, from the land of Jharkhand. Chhattisgarh, it is Adim brand for Bhumigadi FPO और बस्तर Naturals. पंजाब में 5 rivers, नाम ही ऐसे रख दिया. Tripura में Tripureshwari fresh. So various brand names have been cultivated now in organic farming with the help of government. Okay. इनके business tie-ups बना रहे हैं अदानी ग्रुप के साथ. Adani Group is the major buyer now. If you look at more stores and so on, तो उनके through फिर उनका retail segment भी है. Now, government has initiated large area certification programs since 2020-2021. तो जहाँ पे traditional farming वैसे ही हो रही थी, जैसे कि hills में, islands में, tribal areas में, desert areas में, and there is no past history of GMO or agrochemical usage, तो वहाँ पे large area certification कर रहे हैं, ताकि organic के नाम पे at least farmer income को ensure किया जा सके. So that's the main thing here. Then move on. मैं वैसे एक चीज देख के बड़ा हैरान होता हूँ. पहले सारा जोर ग्रीन रेवोल्यूशन पे था केमिकल फार्मिंग के ऊपर, ठीक है. अभी सारा जोर क्या हो रहा है 21st सेंचुरी के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर. ये पुश फैक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं इसके? व्हाट डू यू थिंक इज द पुश फैक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन? व्हाई सडनली अ शिफ्ट? एक तो डेफिनेटली एक शिफ्ट का कारण है कैंसर, जो बढ़ना शुरू हो गया. फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द हाई यील्ड variety of crops that were planted during the green revolution, because they changed the protein structure, the carbohydrate structure of the plants just for the sake of getting a higher yield. So that is something that your body is not used to, and that leads to high sugar levels, and then that leads to high blood pressure, and that leads to many other problems. Yes. सो कैंसर, स्ट्रोक, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हुई. इस वजह से अब थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ हमने जाना शुरू किया, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसके लिए भी क्या जरूरत थी? इसका कंसर्न दो था, ट्विन फोल्ड. 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा है, तो बहुत सारे एक्सप्लोजिव बच गया वर्ल्ड वॉर 2 का. वो जो एक्सप्लोजिव बच गया, अब वो एक्सप्लोजिव को यूज तो करना था, बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ है, उसको संभालना मुश्किल है. वर्ल्ड वॉर 2 finished abruptly. Now all these companies, there are two major worldwide investment firms, BlackRock and Vanguard, and they have their sister concerns worldwide जिनमें वो investment करते हैं. So what they suggested at this point is that there is a problem of food security. Let's now convert all this explosive into fertilizer. Fertilizer itself is explosive, by the way, you should know. Okay. And then utilize this for ensuring food security. That's when the idea of adding fertilizer to your soil started. नहीं तो एक ही चीज ऐड होती थी, गोबर, ट्रेडिशनली, तो और कुछ नहीं. This is how the war industry entered the agriculture. ठीक है. Once that happened, then a lot of money came in because of this fertilizers and everything. Because war industry is a $13 trillion industry, and that industry, when it enters anywhere, it will create war. So definitely now there is war in agriculture. However, the victims of this war in this case are silently the people who are maybe at least getting food security, but at the same point of time generally through government support. Yeah. तो ये सारी चीजें चल रही हैं. अब इसके चक्कर में अभी ऑर्गेनिक की तरफ चले गए हम, क्योंकि वो सारा हो गया यूटिलाइज जितना था. अभी ये वॉर इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, ठीक है. अब फर्टिलाइजर की कमी है इनफैक्ट. अब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग ना तो इंडिया में उतना हो रहा है, ना वर्ल्ड ओवर ही उतना हो रहा है. ऑयल, फॉसिल फ्यूल, इन सब चीजों के बेसिस पे naphtha gas is one of the major component, natural gas is one of the major component for fertilizer manufacturing which is being used today, ठीक है. तो वो भी अब हर जगह ही कमी है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक, जीएमओ अब इस तरफ जाना शुरू हो गए, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म.
back to the pre-1940s or even pre-industrial form of agriculture. So that's the concern here. Okay. इससे बहुत सारे ट्रबल्स शुरू हुए, इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी चीजें। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड शुरू हुआ ना, जैसे अमेरिका के अंदर हर जगह के अंदर, तो फ्री मील्स देने शुरू किए गए, $1 मील। तो लोग ओबेसिटी की तरफ जाने शुरू हो गए, अननेसेसरली दे आर ईटिंग लाइक दिस बिकॉज द फूड इज बिकमिंग सो चीप देयर। अब लेकिन जैसे जैसे ये विड्रॉ हो रहा है, यू आर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स आल्सो, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। ओके, धीरे धीरे टाइम ये दोबारा आएगा कि लोग अपनी अपनी खेती शुरू कर देंगे, एक एक एकड़ जमीन लेके, एटलीस्ट अपनी सब्जियां अपने फल वो उगाना शुरू कर देंगे। दैट विल कम बिकॉज थिंग्स विल नॉट बी वेरी मैनेजेबल 10 years down the line. Right now it is still manageable because a lot of people in India are in agriculture, but 10 years down the line their children will not be in agriculture, most of them, है ना? So they will be trying to move out of agriculture because it is not remunerative enough. और कॉस्टिंग किसी चीज की एक पर्टिकुलर मार्केट क्लियरिंग वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्लियरिंग वैल्यू? मार्केट क्लियरिंग वैल्यू इज कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लोग कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। कैन यू इमेजिन टमेटोज एट 280 rupees per kg? Hello. Today that is the price of tomatoes in Chandigarh. 280 rupees per kg. If you want to buy, that's the price. Okay. तो 100 तक तो आप सुन रहे थे ना, अभी आज का प्राइस ये, बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन एंड ऑल, मे बी इन 3-4 days it will correct. Somebody saying buy puree. No need, just don't eat tomatoes for 2 to 3 days. It's actually good for your system. In monsoons, you are not supposed to consume tomatoes too much. खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए monsoon में. They're not healthy for your system at this point of time. Except for lemon. That's the only thing that you can use, and use lemon. Okay. Then मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़ जाइए। ये नॉर्थ ईस्ट में सिविल सर्विसेज हो रहा होगा, उधर कहीं पूछेंगे, हमारे यहाँ पे नहीं पूछेंगे, यूपीएससी के अंदर टेंशन नहीं है इनको ज्यादा। देन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, कम टू दिस वन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड द नेचुरल फार्मिंग थ्रू भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति, a sub scheme of Parampragat Krishi Vikas Yojana since 2020-2021 to promote traditional indigenous agroecological farming, including zero budget natural farming, which has gained a huge importance across the country. So अभी कितना हो रहा है? 4.09 lakh hectares has already been covered in 8 states under भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति. Okay, basically the old way of cultivation. Okay, now what is to be done? It is being upscaled in the mission mode as a separate national mission on natural farming to cover 7.5 lakh hectares by developing 15,000 clusters. अभी हमारे पास सिर्फ 4 है, हम इसको डबल करना चाहते हैं almost. Now the scheme is already being appraised by the EFC on 4th October 2022 and is being submitted for cabinet approval. So जैसे ही अप्रूव हो जाएगी अगले बजट सेशन से हम शायद इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वही जो ऊपर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े ना, वही 4 चीजें याद रखा हुआ है। हर जगह हर स्कीम के अलग अलग ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो जनरल फार्मिंग के लिए, जनरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, देन सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 से चल रहा है, आपने इसके बारे में बेसिक्स पढ़ रखे हैं। मूव फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसमें बस बेसिक्स पता होना चाहिए कि 6,000 देते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है। डोंट बॉदर एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ये इनकम सपोर्ट स्कीम है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम नहीं है, क्योंकि 6,000 में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो ये हमें नहीं चाहिए। सर बट पीएम किसान का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही लिस्ट करते हैं ना सर कि इट इज एन इनपुट आइटम्स के लिए सपोर्ट स्कीम। क्योंकि वो इनकम सपोर्ट स्कीम बोलेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डिफीट होता है। उधर वो बोलते हैं कि इनकम सपोर्ट स्कीम, जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम्स है वो नहीं दे सकते आप, इसलिए इसको इनपुट सपोर्ट बोल के देते हैं, ठीक है?
I hope I am clear. Next is National Crop Insurance Program. So agricultural insurance. So keeping in view the risk involved in agriculture, there is a need for insurance, obviously, and therefore Ministry of Agriculture and Farmer Welfare introduced crop insurance scheme in 1985. तब से चला आ रहा है, नया नहीं है. अभी हमने आजकल इसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दो चल रही फिलहाल इंश्योरेंस को लेके. Considering the farmers' demand, the scheme has been revamped in February 2020. Under this, participation is made voluntary for all farmers, whereas it is compulsory for loony farmers. So that is the situation. The total funds released by the government of India under this, don't bother kitna fund release ho gaya. Now, what is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? इसको revamp कर दिया गया अभी तो. Revamped में जो center state की contribution है वो change हुई है, बाकी system same है. So it was started in Kharif 2016. It is being implemented in 18 general insurance, 5 government level companies. What we will be doing here? So a uniform maximum premium of only 2% of the sum insured is paid by the farmer for Kharif crops, 1.5% for Rabi crops, and 5% for commercial and horticultural crops. So farmer को इतना ही देना, बाकी government पे. The premium rates paid by farmer are very low, and the balance actuarial premium is being borne by the government to be shared equally by state and central governments. Equally means 50-50. Okay. Northeast में 90:10 है to provide full insurance amount to farmers against crop loss and on the account of natural calamities. What is happening here? अभी इसको 25-20 कर दिया गया. Here it is. The central subsidy for premium is capped up to 30% for unirrigated areas. So this is the revamped scheme. Change kar diya ab. And 25% for irrigated areas. District with irrigated area of more than 50% will be considered as irrigated district. ठीक है. तो sum insured जो है, जो central government की liability थी वो कम कर दी गई. अलग अलग स्टेट्स इसको अपने हिसाब से बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे. अब स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी 70 या 75% है. देन मूव ऑन. पंजाब में तो जैसे हम इसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे हो ढंग से. ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. Review of operational guidelines of the scheme and issued of revised guidelines. अभी स्कीम कैसे चल रहा है? The scheme implementation is reviewed and monitored constantly through weekly video conferences, one-to-one meetings with the stakeholders on regular basis, and national level monitoring committee. तो उसके बेसिस पे इसकी रिव्यू चलती है कि कैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है. Based on this review, we have been saying that जो claim settlement ratio है वो इसका अच्छा है. So though the scheme and revised operational guidelines were made after the detailed discussion of various stakeholders, farmers, states, insurance companies, and financial institutions, etc., some points issues like voluntary coverage of non-loany farmers, addressing challenges of delay in release of state premium subsidy, and crop cutting data and leveraging technology for smooth implementation, etc., were identified as critical issues in implementation of the scheme during the first 8 seasons. तो अभी तक जो इम्प्लाई किया गया उसमें ये कुछ मेजर दिक्कतें रही. स्टेट गवर्नमेंट्स अपना पैसा रिलीज नहीं करते, टेक्नोलॉजी ठीक से यूज नहीं हो रही, और सेटलमेंट में देरी होती है. नॉन लोनी फार्मर अभी भी वॉलंटरी है, कोई कराए ना कराए, इट्स लाइक दिस. लोनी के लिए तो कंपल्सरी है. Thereafter, after making detailed discussion, this has been revamped with following changes to make the scheme more beneficial for the farmers with effect from Kharif 2020. Now, to address the demand of farmers, the scheme has been made voluntary for all farmers. तो पहले सिर्फ लोनी farmers के लिए mandatory था, अभी it is voluntary for all farmers. No change in farmers' share of premium. अभी ये चीजें हैं. Then the premium subsidy sharing between center and northeastern states has been changed from 50-50 to 90-10. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अच्छा हो गया.
For remaining states, the subsidy sharing pattern will continue to 50-50. वो जो 70-30 वाला था उसको इस तरह से बोला गया. लेकिन to address the issue of high premium rates for few crops, area due to adverse selection, the requisite central premium subsidy 90-10 for northeastern and 50-50 for remaining states will be provided for areas crops having gross premium rate of up to 25% for irrigated and up to 30% for unirrigated crops. तो कुछ crops के लिए उन्होंने ये वाला system अभी adapt किया है, सारों के लिए नहीं. States have to decide on the high risk crops and areas. और ये कौन से crops होंगे state governments को decide करके बताएंगे, क्योंकि उनका contribution बढ़ रहा है, 70% हो रहा है. They can remove these crops from notification or notify these crops or areas and bear the entire subsidy over and above 25% for irrigated and 30% for non-irrigated. Central government will share only up to 25 to 30% of applicable premiums as the case may be. Besides, alternate risk mitigation measures will be explored for the high risk areas or crops. जैसे कि कुछ areas हैं जहाँ पे droughts, कुछ areas हैं जहाँ पे flooding रेगुलर लेवल पे हो रही है, एरिया बेस्ड भी रिस्क असेसमेंट किया जाएगा. तो अगर सेंटर और स्टेट के अंदर वेरिएंस आएंगी तो स्टेट हैज टू बेयर द बर्डन. ये स्टेट्स अपने लेवल पे कुछ कर नहीं रहे थे इसको लेके, इसलिए ये वाले सारे काम करने पड़े. Insurance companies will now be selected by the states for 3 years in a go instead of 1 year, thereby increasing their commitment and accountability to the farmers. पता चला इंश्योरेंस तो कर दिया आपने, लेकिन जब तक पैसे देने की बारी आपने कहा हमारा तो मैंडेट खत्म हो गया जी. ठीक है. Option has been given to states to choose from the notional value of average yield or scale of finance as sum insured in the interest of farming community. In the view of demand of many states, option have been given to state to choose additional risk covers besides shortfall in yield, depending upon the local weather challenges and requirements of the farmers. तो अगर कुछ additional coverage देना चाहते हो, जैसे market में price realization, तो वो भी जोड़ सकते हो. अभी तो सिर्फ जैसे yield है कि पिछले सालों के मुकाबले yield कम हुई तो risk cover होगा. Then insurance companies to pay 12% interest to the farmers for delaying the claim payment beyond prescribed timeline. ये बहुत अच्छा है. ठीक है. Then a two-step process of crop yield estimation using weather and satellite indicators etc. is adopted, which helps in early assessment of loss. जैसे अभी करना होगा पंजाब में. Use of smart sampling technique through satellite data for crop cutting experiments by some states has shown increased efficiency in implementation. This will now be universalized. So small sampling techniques लगा लेंगे. Delay by some states in submission of crop yield data will now be suitably addressed through use of technology solutions. अगर states data नहीं submit कर रहे तो satellite से data ले लिया जाएगा. Provision has been made for earmarked administrative expense at 3% of the strengthening infrastructure and technology for better delivery of the scheme. तो स्कीम तो चलेगी और ये वाले बेसिस चेंजेस के ऊपर चलेगी. अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक आपको रिव्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. रिव्यू इट्स वर्किंग. सो उसके अंदर ये सारी चीजें चाहिए होंगी. सो लिख लीजिए, रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in Indian agriculture. What, according to you, should be improved in agricultural insurance? तो जो यहाँ पे सजेशन दिए ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, बेटर सपोर्ट, है ना, तो वो सारी चीजें. नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, डोंट बॉदर. आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन, ये रही. So, with a view to contribute to commemorate 75 years of India's independence under Azadi Ka Amrit Mahotsav at India at 75 campaign, department has planned crop insurance week or Fasal Bima Saptah during Kharif and Rabi enrollment season. तो basically ज़्यादा से ज़्यादा farmers को awareness generation भी होगा, campaign लगा के इसमें enroll किया जा रहा है. बस इतना ही चाहिए.
Moving on, एग्रीकल्चरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो इस रिपोर्ट से जैसे मैंने कहा ना, सारी चीजें ही हो जाएंगी हमारी जो हमें करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे 2-3 दिन लगाने बनते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने, ठीक है, 8 में से, या 4 क्वेश्चन आएंगे 9 में से, तो दैट वे 50% क्वेश्चन तो यहीं से है। तो डोंट स्किप दिस रिपोर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट या फाइनेंस के अंदर बेसिक सी बात क्या है कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और मनी लेंडर्स से, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से बचने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में सबसे ज्यादा रोल किसी ने प्ले किया है तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने किया है, एज यू नो फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज। और लेकिन अभी इसमें रूरल क्रेडिट के लिए जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, ये सारी हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर बीइंग क्रिएटेड नाउ। दिस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन फार्मिंग, इसको देने के अलग अलग तरीके हैं। एक किसान क्रेडिट कार्ड है, कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इस तरह से उसको वर्कआउट किया जा रहा है। अभी धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी एग्रीकल्चर के नेट में रख के, जैसे कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर जो है, या जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में काम कर रही हैं, उधर भी इन लोन्स को फॉरवर्ड किया जा रहा है। लाइव स्टॉक फिशरी सेक्टर में भी इन लोन को फॉरवर्ड किया जा रहा है, नॉट जस्ट क्रॉप्स। तो 2020 ऑनवर्ड्स हमारा ये जो ओरिएंटेशन है, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट क्रॉप टू लाइव स्टॉक, फिशरी एंड अदर लाइट एक्टिविटीज ऑल्सो। उसका एक कारण है, इंडिया में एक जब 2017 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उन्होंने ये ओरिएंटेशन बताया कि 2011-12 से लेके अगर 2016-17 की स्टडी की जाए, तो जो क्रॉप बेस्ड इनकम है, दिस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 65% टू 60%। 2011-12 में 65% एग्रीकल्चर में से क्रॉप इनकम, क्रॉप बेस्ड इनकम आती थी, अभी 60% है। और जो लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इनमें से 35% इनकम आता था पहले, अभी 2017 के अंदर 40% इनकम आ रहा था। तो 60-40 का इसमें ओरिएंटेशन आ रहा है। तो कहने का मतलब जो एग्रीकल्चरल इनकम है, वो अभी सफिशिएंटली रिलाई कर सकती है लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरी के ऊपर भी। इसीलिए जो एग्रीकल्चर क्रेडिट भी है, उसको भी क्रॉप से डाइवर्सिफाई करके लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरी की तरफ लेके जाया गया है। रिक्वायर्ड है ना, इन्वेस्टमेंट तो एग्रीकल्चर के अंदर ही होनी, लाइक दिस। तो द डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम in terms of its compartments is also now determining the direction of agricultural credit. ये लाइन लिखनी है आपको, रिपीट करूं या लिख लोगे? हेलो हेलो, So please repeat. ओके, लिख लीजिए। द डायरेक्शन एंड कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, डायरेक्शन एंड कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम is now transitioning, since 2011-12, from crop based income, to livestock, forestry and fisheries. To livestock, forestry and fisheries. And therefore, a similar trend is being adopted in agricultural credit. Similar trend is being adopted in agricultural credit, keeping with the vision, of integrated farming, comma, diversification of farmers' income and doubling farmer income. Diversification of farmers' income and doubling farmer income. Okay. So what is being done? First is the policy initiatives for increasing the
flow of credit. So let's see क्या किया गया. First is agricultural credit target and achievement. तो हमारा 2022-23 का एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है वो 18.5 लाख करोड़ रुपए का है. दैट इज वन. अब कैसे दिया जाएगा? फर्स्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2006-7 से चल रही है और दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड. तो ये दोनों शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं. कितना इंटरेस्ट रेट लगता है नटशेल में? दैट इज 4%. So MISS is available to farmers with loans up to rupees 3 lakh with the interest rate of 7% per annum. तो उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है फॉर प्रॉम्प्ट एंड टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स. 7% अपने आप में ही कम है ना. और देंगे कौन कौन? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज, इन सारे सेक्टर्स में अवेलेबल है. So the same gets reduced to 4% per annum. ये इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इसका बेनिफिट क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट सुधरेगी, आपको कम ब्याज पे पैसे मिलेंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेटर आएगा. ओके. Now interest subvention and prompt repayment incentives on restructured crop loans of farmers affected by severe natural calamities for a maximum period of 5 years on the basis of the report of interministerial central team for grant of NDRF assistance and subcommittee on national executive committee is also available. अगर कहीं पे अब जैसे पंजाब में इश्यूज हो गए तो अगर उनको एक्सटेंड भी करना पड़ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन था 1 ईयर का, उसको 5 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते. ये बेसिक मतलब है सारी चीज का. ठीक है. देन ये सारी चीजें छोड़ दीजिए. कम टू किसान क्रेडिट कार्ड. सो इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 to meet short-term and long-term cultivation requirements, post-harvest expenses and consumption requirements. मतलब normal credit card की तरह भी use कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ agriculture के लिए नहीं. It is implemented by commercial banks, cooperative banks and regional rural banks under the overall guidance of Department of Financial Services. So RBI has issued a master circular for the implementation of KCC scheme and with the instructions from time to time. So अभी इसमें क्या-क्या चीजें available हैं? Come to this. So there is a collateral-free agricultural loan limit has been raised from rupees 1 lakh to 1.6 lakh. Standardized application of KCC has been designed for easy understanding of the farmers, and a time limit of 14 days from the receipt of farmers' application has been fixed to provide KCC to all eligible farmers. Digital KCC पहले issue कर देते हैं, physical card आने में अगर time लगेगा तो लगेगा. Now what all is done to bring more farmers into this? So KCC farmers, so they can get loan at cheaper rate through MISS. तो जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर भी लोन 3 लाख रुपए तक का ले सकते हैं. क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.6 लाख है, MISS के अंदर 3 लाख है. ठीक है. So that is there. एग्रीकल्चर क्रेडिट. नाउ कम्स टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ये बहुत एक्टिव एरिया रहा पिछले 2 साल से, जब से फार्म लॉज आए हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं. Now, the government of India has been playing a pivotal role in developing agricultural market systems in the country. Agriculture Marketing Division of Department of Agriculture and Farmer Welfare is interested to look after a gamut of issues relating to agriculture marketing, starting from conceptualization and formulation of farmer-oriented policies and programs for effective monitoring thereof. So, anyhow, क्या-क्या किया है इसको लेके? So agriculture sector needs structured and functional markets, preferably in the vicinity of the farmers, पास में होना चाहिए, to drive growth, employment, remunerative prices and economic prosperity in rural areas of the country. तो markets कैसी चाहिए? Structured, functional, near. 3 चीजें होनी चाहिए market के अंदर minimum. Enabling mechanisms are also required to be put in place for the procurement of agricultural commodities directly from the farmer's field and to establish effective linkage between the farm production, retail chain and food processing industries. इन तीनों के बीच में linkage होगी तभी जाके ठीक से remunerative farming होगी. In order to remove restrictive and monopolistic practices of present marketing system, reduce the intermediaries in supply chain, and reduce wastages by way of promoting integrated supply and value chain, benefit farmers through access to global markets,
reforms in agriculture market have to be perceived as an ongoing process. ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिफॉर्म में आ जाएंगे या एक लॉ या एक रूलिंग से आ जाएंगे. तो ये हमारा टारगेट है रिफॉर्म का, किस डायरेक्शन में रिफॉर्म करना है एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर. ठीक है. Agriculture sector needs competitive, well-functioning market for farmers to sell their produce. There is a need to enhance private sector investment in development of post-harvest marketing infrastructure, for which various schemes are being implemented by Government of India. अब इस पे एक क्वेश्चन लिखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे. फर्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. ओके. हाउ do the recent initiatives taken by the government help in agri market reforms and doubling farmers' income? फिर पीछे इसके लिखना हुआ तो लिख देंगे क्रिटिकली एग्जामिन, अगर और मुश्किल बनाना हुआ तो 250 वर्ड का क्वेश्चन बनेगा, यही कंटेंट रहेगा उसका. ठीक है. So what all is being done? Let's see. First is integrated scheme for agricultural marketing and central sector scheme for the formation and promotion of new 10,000 farmer producer organization, जो कि बजट में कहा गया था. ऐसा है ना, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू एग्री मार्केटिंग एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. ठीक है. अब क्या क्या किया गया एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स को लेके. सो देयर इज एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल एग्री मार्केट, दैट इज ENAM, then marketing research and information network, then there is strengthening of AgMark net, basically that is agriculture marketing net, grading facilities, and CCS, National Institute of Agriculture Marketing, so that's for training facilities. बेसिकली इससे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क था दैट वाज एगमार्क नेट. आज भी चलती है वेबसाइट. एगमार्क नेट पे सारी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर मार्केट. अभी हम ENAM के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर आगे जाके इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और रिफॉर्म हो सकता है. व्हाट आर दे डूइंग हियर? ऊपर वाली सारी स्कीम्स का नाम ही है और कुछ नहीं किया गया यहाँ पे. दिस पर्टिकुलर, जस्ट मूव ऑन. अब देखिए, Central sector scheme for formation of farmer producer organization of new 10,000 FPO scheme is implemented through various implementation agencies, IAS, presently. So we are trying to produce clusters of small farmer agri-business consortium, National Cooperative Development Corporation, NABARD, NAFED, NIRAMAC, that is Northeast Region Agriculture Marketing Corporation Limited, TNSFAC, Tamil Nadu Small Farmer Agri Business Consortium. Similarly, हरियाणा के लिए SFAC है. Then कर्नाटका के लिए भी इसी तरह से Rural Value Chain Development है. So many institutions are coming together just to be able to support these 10,000 FPOs that we are trying to create. FPO का basic concept है क्या? हम ये चाहते हैं कि फार्मर और कंज्यूमर के अंदर डायरेक्ट लिंकेज बने और डिसइंटरमीडिएशन हम कर सकें, इंटरमीडिएट्स को कम करें, ताकि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली फार्मर तक पहुंचे. इसके लिए अलग अलग चीजें चलाई जा रही. अब फार्मर कई बार अकेला सक्षम नहीं है ये करने के लिए, तो इसी वजह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जाती, कंज्यूमर्स को भी उनके साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, तो दे आर एबल टू हेल्प ईच अदर डील विद द थिंग्स. सो दिस इज द वे वी आर ट्राइंग टू प्रमोट. जो इवन PGSI है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन खुद कर सकते हो, वो भी इसी के पार्ट एंड पार्सल के अंदर ही है कि फार्मर इनकम कैसे बढ़ाया जाए. ये सारी रिकमेंडेशंस जो इसके लिए आई थी वो अशोक दालवाई कमिटी फॉर डबलिंग फार्मर इनकम तब से आई हैं और उसी बेसिस पे हम काम कर रहे हैं 2018 से. ठीक है. नाउ integrated scheme for agricultural marketing. So what they are trying to do, what they could not bring through an act, they are trying to bring it through a scheme. So first is agri marketing infrastructure. What it includes is storage infrastructure,
बेसिकली। तो इसमें क्या क्या करेंगे देखिए। The erstwhile two schemes of Grameen Bhandaran Yojana, implemented since 2001, and Scheme for Strengthening and Development of Agri-Market Infrastructure, Grading and Standardization, implemented since 2004, have been subsumed to what is now known as Agri-Market Infrastructure with effect from 2014. So that is Agri-Market Infrastructure. तो पुरानी schemes को इकट्ठा किया गया। अब इसमें क्या वर्कआउट क्या हुआ, ये वाली सारी चीजें छोड़िए, यहाँ पे। So with the recommendations of 15th Finance Commission coming into effect, following objectives के साथ operational guidelines इस स्कीम की चल रही हैं। अभी वो ये वाली operational guidelines तो चल पड़ी 2021 तक। तो उनमें क्या किया गया? Develop marketing infrastructure to effectively handle and manage marketable surplus of agriculture and allied produce in all sectors, जितने भी हैं, livestock, poultry, fishery, bamboo, and so on. Promote innovative and latest technologies in post-harvest and agriculture marketing infrastructure. Develop alternative and competitive marketing channels कि सिर्फ मंडियां ना रहें, अनाज मंडी ना हो, बाकी भी channels हो। और ये कैसे किया जा सकता है? Through incentivizing private and cooperative sectors to make investments thereof, private sector को लाके। Benefit the farmers individually and collectively through FPOs. Promote creation of scientific storage capacity. Incentivize development and upgrading of ग्रामीण हाथ्स, इनको ग्राम या ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स भी बोल रहे हैं हम, और इनको ई-नैम से इंटीग्रेट करना है ताकि यहीं पे किसान अपनी फसल छोड़ जाए और आगे ई-नैम के थ्रू बिक जाए। Provide infrastructure facilities for grading, standardization, quality certification of agriculture and allied produce. Promote integrated value chain through minimal processing, value addition to make produce more marketable, including grading, waxing, ripening, packaging, labeling, etc. Undertake publicity and awareness campaigns so farmers can work like agripreneurs. So this is it. अब इसमें बाकी का टेंशन नहीं लेना, बस इतना जो चीजें गाइडलाइंस हैं उन्हीं के बेसिस पे आपका काम हो जाएगा। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या करने की जरूरत है वो सारा कुछ यहाँ है, क्या गवर्नमेंट कर रही है वो भी है। मूव ऑन। ये ई-नैम वाला वर्कआउट चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो NAM इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। इसको लेके क्या डेवलपमेंट सोच रही हूँ, कई बार ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। which seeks to network the existing physical APMCs जितनी भी हैं through a virtual platform to create a unified national agriculture market for agriculture commodities. It is a virtual market, but it has a physical market called mandi at the back end. So online trading हो रहा है लेकिन है मंडी उनके भाव के बेसिस पे होगी। It provides a single window service for all APMCs related information and services. क्या क्या है? Commodity arrival, quality and prices, buy and sell offers, provision to respond to trade offers, and electronic payment settlement directly into farmers' account, among other services. So ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब इतना करके फिर उसके बाद आगे आ जाइए। Under the scheme, robust common e-market platform is there. So right now, 1,000 APMCs have been made, wholesale markets बोल रहे हैं. So they have been already integrated in 18 states and 3 UTs by May 2020. Yep. So just give me a moment. Okay. Now, Department of Agriculture and Farmer Welfare granted an one-time fixed cost to the ceiling of rupees 75 lakh per mandi for related equipment, infrastructure and so on. तो बेसिकली हर मंडी को जोड़ने के लिए इन्होंने 75 लाख रुपया बोला कि ई-नैम के अंदर जुड़ेगी
तो जो मंडी डेवलपमेंट बोर्ड है सॉर्ट ऑफ उनको 75 लाख रुपया देंगे कि ई नैम के अंदर जुड़े, तो एक तरह से इंसेंटिव भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें करेंगे क्या? What are the marketing reforms mandatory for joining ENAM? First is provision of e-auction, e-trading as a mode of price discovery, single point levy of market fee across the state, and single trading license to be valid across the state. हर ट्रेडर को हर मंडी में अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता नहीं, तो ऐसा नहीं है, एक ही लाइसेंस होगा, सारे स्टेट में चलेगा। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं अगर आपने ENAM ज्वाइन करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल वाइड एक एग्रीकल्चर मार्केट बनाना है, फार्मर को ज्यादा से ज्यादा इनकम दिलाना है। बेनिफिट क्या होगा? उसको अलग अलग मंडियों में जाके भाव पूछने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही उसके पास सारा कुछ वैल्यू ओरिएंटेशन आ जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। नाउ की फीचर्स। So right now ENAM website and mobile app has been created. It's functional in 12 languages. There is a mobile application also developed. एक website है, एक application है, so you can just go to the Play Store and download ENAM. Okay, and it will locate the mandis 100 किलोमीटर के रेडियस में कहाँ पे आप अपना अनाज लेके बेचने जा सकते हैं। गेट एंट्री जो फी देनी होती है मंडी फीस, वो एडवांस पेमेंट कर सकते हो ऐप के बेसिस पे। सैम्पलिंग और सेइंग फैसिलिटी भी सारी की सारी वहीं पे हो जाएगी। आपकी लॉट का प्रोग्रेस क्या है, कितनी देर में पिक होगा, एवरीथिंग। ऑनलाइन पेमेंट, SMS अलर्ट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, अपडेशन, एवरीथिंग। सो दैट इज बीइंग फैसिलिटेटेड। तो एक तरह से फार्मर एग्रीप्रेन्योर बन सकता है, अपने लेवल पे ही सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल दे दिया गया उसको। अब इसका जो एक चीज प्रॉब्लम थी कि सपोज अकेला फार्मर नहीं कर पा रहा, तो अब FPOs कर सकते हैं उसकी जगह। So farmer producer organizations can directly sell their produce from collection centers by uploading produce details with picture, quality parameters online without the need to physically bring the produce to mandis. तो ये एक अच्छा हो गया उनके लिए, उनको एक डीम्ड टू बी मंडी स्टेटस दे दिया। दूसरा, अब सपोज कीजिए पंजाब के किसान की फसल है लेकिन खरीद ली हरियाणा वाले ने, लेके कैसे जाएंगे उसको? तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल है। So what will it do? It will enable the logistics service provider to create their profile with the details, including name of the company, area of service, number of vehicles available, base rate, etc. तो कौन सी चीज कहाँ से कहाँ कितने में जाएगी, वो सारी चीजें ENAM के अंदर ही इंटीग्रेट कर देगी। तो आपका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी लग के आपको पता चल जाएगा कि कितने में बिकेगा, और बंदे को खरीदना आसान, खरीदने वाले को, बेचने वाले को बेचना आसान। नहीं तो पहुंचाना अपने आप में मुश्किल था, वो इसमें मिसिंग कंपोनेंट था पहले। It is currently available in traders dashboard, enabling them to choose and finalize logistics for the movement of their produce. Then integration of ENWR with ENAM. So that is basically negotiable warehouse receipts. Warehouse receipts are like, कई बार क्या होता है कि आपकी फसल के सही प्राइसेस आपको नहीं मिल रहे मार्केट में, तो आपको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, इसलिए आप वेयरहाउस में जमा करा देते हो, स्टोरेज में जमा करा देते हो और एक रसीद मिल जाती है। दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रसीद। आपको बस फिर वही रसीद के बेसिस पे ट्रेडिंग कर लेनी। उस रसीद पे लिखा होगा क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, ऑर्गेनिक है, कैसा है, सब कुछ मेंशन होगा। मार्केट एवरेज प्राइस क्या है वो भी मेंशन होगा। तो उसके रिसीट के बेसिस पे ही आप सारी की सारी वर्कआउट कर रहे हो। आपको ग्रेन मूव करने की फिजिकली हर बार जरूरत नहीं है। ENWR के बेसिस पे ENAM पे ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। Interoperability of ENAM and UMP REMES. So what is this? So interoperability with UMP platform of REMS that is in Karnataka has been done. तो state based जो पहले पोर्टल्स थे, कोई इंडिविजुअल चल रहे थे, तो उनके साथ भी इंटीग्रेट किया गया। ऑनबोर्डिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑन ENAM प्लेटफॉर्म। तो कितने FPOs अभी तक आ गए? तो करीब 2400 FPOs यू कैन सेफली से कि आ गए, 2300-2400 FPOs आर देयर नाउ, ठीक है। Then that's it for ENAM. Move forward. जो मैं कह रहा हूँ ना मूव फॉरवर्ड, इसको पढ़ने के चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ नहीं निकलने वाला ढंग का, ठीक है। जहां से जो जितना है काम का, वी आर वर्किंग आउट। देन कम टू एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसी प्रमोशन एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट। यहाँ पे अब WTO का वर्कआउट आएगा साथ साथ में।
Okay, so this is the division of this department is entrusted with the responsibility of making policy recommendations on export, import, and logistics development of agriculture sector and formulation of strategy for boosting the trade in agricultural commodities. It is the nodal division of the department for coordinating and formulating responses on WTO's agreement on agriculture, matters relating to preferential trade agreements, free trade agreements, and agro-logistics with Department of Commerce, and matters relating to modification of custom duty and GST on agriculture commodities of with the Department of Revenue. तो ये वाला डिपार्टमेंट सबके साथ काम करता है. नाउ इंडियाज एग्रीकल्चरल ट्रेड अगर एक्सपोर्ट के एंगल से देखता हूं तो क्या हालचाल है. ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विद यूक्रेन रशिया वॉर व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है. So export of agricultural commodities has helped producers to take advantage of wider international market, which in turn has incentivized their domestic production. आज की डेट में तो बड़ा सिंपल फंडा है. अगर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सेल अब्रॉड यू विल गेट डेफिनेटली हायर प्राइस. वन बिकॉज इट इज एक्सपोर्ट क्वालिटी, two because there is a payment capacity which is higher in developed countries. So if you have a product which you can sell abroad, definitely you will get foreign exchange for your country and good amount of money for your product. तो ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है. एग्रीकल्चर उसमें एक मेन चीज है. आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिकता आ रहा है. ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे स्पाइसेस ट्रेड के चक्कर में ही आए थे. Crops exported in large quantities with rice, sugar, spices have witnessed significant increase in area coverage and growth rate of production. India has emerged as a significant agri-exporter of crops like rice, spices, cotton, oil, meal, cake, castor oil, coffee, tea, all these things, cashews, fresh vegetables and sugar. तो ये हमारे मेन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, याद रखना है इनको. एक्सपोर्ट करते हैं. Now, as per the available WTO Trade Statistical Review 2022, the share of agricultural export and import in the world agricultural trade is only 2.4 and 1.7%. तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम सिर्फ 2.5% है. हर जगह ही हम बस 2-3% के बीच बीच में, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे कहीं पे भी. वर्ल्ड ट्रेड का ही हम 2 to 3% बांट रहे थे. Now, India was in the top 10 ranking of the global agri exporters. That is a separate thing because agri exports ज़्यादा है ही नहीं world over. और top 10 भी बोलने का कंसर्न पता क्या है? First 3-4 और हमारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. India's share of agricultural exports in India's total merchandise export is 11.9%. तो total goods exports में से agriculture export करीब 12% है. Value term ज़्यादा important होती है. पैसा कितना आता है इसके अंदर. So as compared to previous years, the agriculture and allied exports increased to rupees 374,611 crore rupees. So करीब 3,80,000 crore रुपए का agricultural export चल रहा है. Okay. सबसे ज्यादा कौन सी चीजों पे है? So primarily on the account of increased export of commodities like wheat, because Ukraine, Russia were major producers of wheat. अभी war चल रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे एक sizable wheat में increase नजर आ रहा है. Year on year basis पे it is a almost 3 times increase in the export of wheat. Same goes for dairy product export, so that is also very high. Then gram meal, sugar, cashew nut shell, and so many other things. So सब चीजों के एक्सपोर्ट में, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में इंक्रीज आया है. मेजर डेस्टिनेशंस क्या है? हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो कहाँ रहा है? बांग्लादेश, यूएसए, चाइना, वियतनाम, यूएई. ये 4-5 याद रख लो बस. बांग्लादेश, यूएसए, चाइना, वियतनाम बहुत है. ठीक है. Now these are the agricultural exports in figures. So there is a increase if you look at in agricultural export, more so in the recent years after the Russia-Ukraine war. पहले तो नहीं था इतना, अभी 2020 onwards से ज्यादा देखने को मिल रहा है. Okay. Now India's top 10 agricultural export commodities. सबसे ज्यादा हम कौन सी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले है marine products. They fetch the highest income if you look at the value term. ठीक है. Then there is rice, other than basmati, then there is sugar and spices. ये top 4 याद रखना. ठीक है. Then
और बासमती राइस, बफलो मीट, कॉटन, अगर मैं बासमती और नॉन बासमती की वैल्यू इकट्ठी कर दूंगा फिर तो डेफिनेटली ये सबसे टॉप पे चला जाएगा, लेकिन हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे हम भी डिपेंडेंट हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स, आजकल लोगों को खाने की आदत है, इंपोर्टेड एप्पल्स, कीवीज, ड्रैगन फ्रूट्स, सो पल्सेस, इवन स्पाइसेस, इमेजिन cashews, natural rubber, oil meals, oil seeds, cotton raw. So many things are being imported also. टॉप 10 एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स कौन से हैं आज की डेट में देखा जाए तो बस ये याद रखना, वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स एंड पल्सेस, ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, ये वही उसी चीज का वर्कआउट है, सिर्फ टॉप 3 टॉप 4 याद रखना और कुछ नहीं ज्यादा नीचे लेना, मीन्स में लिखने के लिए इतना बहुत होता है। नाउ व्हाट इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज? So at present, export of most agricultural commodities is free without any restriction. Only export of seeds is under restriction, and mustard oil is permitted for export only in branded consumer packs of up to 5 kg, with a minimum export price of $900 per metric ton. एक्सपोर्ट के ऊपर फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीड्स और मस्टर्ड ऑयल के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, फ्री है, टैक्स फ्री है। कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, शुगर के ऊपर, व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, जब इंडिया में इन्फ्लेशन होता है, अदरवाइज नहीं। इंपोर्ट के अंदर देखा जाए तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंपोर्ट ऑफ मूंग, रिफाइंड पाम ऑयल, पोटैटो, सम सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स only are under restrictions and other commodities are free for import. बस इतना याद रखना, इंपोर्ट में डिटेल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही लिखने को चाहिए, ना पढ़ने को चाहिए, ना प्रीलिम्स में, ना मेंस में। जीएसटी को लेके क्या वर्कआउट है? जीएसटी envisages a single tax on supply of goods and services or both by amalgamating all the taxes, one market one tax। अब इसमें वर्कआउट क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर? So GST rates on the raw agricultural items are at 0%. Apart from this, most of the agricultural activities and services are also exempted from imposition of GST. However, for primary processed agricultural items, GST rate is 5%. For secondary and tertiary processed, it is 12%. On-farm machinery, component, fertilizer of GST rate is between 12 to 18%. Primary processed मतलब जैसे कि पैकेज्ड मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा, पनीर, 5% जीएसटी रखता है इनके ऊपर, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोसेस्ड या टर्शरी प्रोसेस मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड चीज, उसके ऊपर 12% जीएसटी है, ठीक है। कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन इनपुट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड सो ऑन, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करते रहते हैं। नाउ ट्रेड एग्रीमेंट्स, so FTA, SICA, SIPA, CEC, EPA, so various kinds of agreements are there in agriculture also. Now India has signed agreements with number of regional trading blocs and countries, namely South Asian Free Trade Agreement, Asia Pacific Trade Agreement, ASEAN, Afghanistan, Mercosur, Japan, so many countries are there. Recently concluded are with UAE and Australia. तो उसके अंदर एग्रीकल्चरल ट्रेड भी है, सिर्फ गुड्स तो नहीं है। अब WTO के अंदर, सॉरी, अभी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस भी हैं विद यूरोपियन यूनियन एंड सो ऑन, इनके साथ भी हम ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है। WTO के अंदर क्या चल रहा है? द कमिटी ऑन एग्रीकल्चर ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मॉनिटर WTO मेंबर्स कंप्लायंस टू देयर कमिटमेंट्स ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो एक सब्सिडीज का इशू आता होता है आमतौर पे, मिनिमम सब्सिडी जो अलाउड है इंडिया में, उसको लेके इश्यूज आते हैं। देखिए, इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज pulses policy, short-term loan, input subsidies, and MSP were responded in coordination with the Department of Commerce. तो WTO में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो वो डेवलपिंग कंट्रीज रख सकती हैं वो 10% रख सकते हैं, जो कैपिंग उसमें है वो 10% पे है, पर वो उसकी जो प्राइसिंग देखते हैं उस कैपिंग को देखने के लिए, तो वो देखते हैं 1986-87 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। 1986-87 में तो हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं था, डेवलप्ड कंट्रीज का प्रोडक्शन ज्यादा था, इसलिए हम बोलते हैं कि वही ठीक नहीं। और दूसरा हमारा, क्योंकि WTO मल्टीलैटरल फोरम है,
तो हमारी वहाँ पे चल जाती है बात कि हम तो कहते हैं भी इंडिया में इतने लोग गरीब हैं, तो हम तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमें देना होता है अनाज उनको, इसलिए एमएसपी भी ज़रूरी है, इसलिए वो पूरा सिस्टम चलेगा जैसे हम चलाना चाहते हैं। तो इंडिया में एक पीस क्लॉज दिया गया एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा और वर्कआउट करूंगा, पहले डब्ल्यूटीओ के बेसिक्स पढ़ लेंगे एंड देन विल वर्क ऑन इट मच मोर वहाँ पे। Now, how are we trying to strengthen agricultural export of India? First is creation of agri cells in nations abroad. So what are they? So they are created by Ministry of External Affairs in 15 Indian missions. So agricultural cells कहने का मतलब क्या है कि promote करेंगे एक तरह से हमारे products को. So they compile information on demand supply of various commodities in the host countries which could be utilized by these exporters. Okay. Then export promotion forum. So product specific export promotion forum for 8 agri products: grapes, mango, banana, onion, rice, dairy products, pomegranate, and floriculture have been created by the DOC and is under the aegis of Agricultural Processed Food Export Development Authority, APEDA, at the insistence of Department of Agriculture and Farmer Welfare. So इसके through product specific export promotion हम करते हैं. Then each export promotion forum is having exporters of related commodities as its members along with official members. जो departmental members आएंगे and they try to promote things. कैसे हो सकते हैं? That's it. Agricultural exports. Then राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. This is a general scheme. मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा bullish नहीं हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी आने के चांस हैं because I don't know. इसके अंदर आपने कुछ वर्कआउट करना हुआ तो एक दो जो सक्सेस स्टोरीज है वो पढ़ लेना कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आरकेवीवाई डेवलप कर रहा है. ठीक है, जस्ट रीड 1 or 2 एग्जांपल्स फ्रॉम दिस. महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है या कुछ एक आधा, ड्रोन्स की यूटिलाइजेशन है, व्हाटएवर, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राउट मैनेजमेंट जो ज्योग्राफी में पढ़ा है वही है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ड्राउट मैनेजमेंट, लीव इट. इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेन नॉट अ बिग डील. ये तो मिनिस्ट्री कहाँ पे किसके साथ क्या एग्रीमेंट कर रहा है वो सारी चीजें हैं. मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आना मुश्किल है इस चैप्टर में से. ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड. इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस एंड स्टैटिस्टिक्स. सो ऑलरेडी वी हैव सफिशिएंट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स. जो आपने ऊपर देखा ये सिर्फ स्कीम के बारे में हाईलाइट करता है कि कैसे एग्रीकल्चर के लिए हम स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहे हैं. नहीं चाहिए. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नहीं चाहिए. जो नेशनल मिशन पढ़ लिया वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो इधर it's not required. Okay. किसान कॉल सेंटर्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं. आप वैसे ही मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम का पार्ट है. सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, डोंट बॉदर. सीड क्वालिटी इज द मेन इशू. सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इज अनदर मेन इशू. तो वो एक जनरलिस्टिक सा ही क्वेश्चन आएगा. गवर्नमेंट ने उसको लेके जैसे सीड विलेज प्रोग्राम पुराना चलाया था, आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, इसी चीजें हैं, नथिंग न्यू है. देन मेरे को देखने में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन पढ़ने लायक चीजें जो निकलती हैं वो कम निकलती हैं, पर जो है वो अच्छी है, वो हमें यूटिलाइज भी करनी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जो बेसिक्स पढ़ रखे हैं वही चाहिए, सिर्फ इतना वर्कआउट चाहिए इसमें से. बेसिकली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, उन सब के लिए एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो इम्प्रूव्स द सेफ्टी कंफर्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, improvement in the quality and value addition of farm produce, and ultimately makes agriculture attractive and profitable and makes it commercial instead of subsistence. ये mechanization का बेसिक्स है, बस उतना ही पढ़ना है. ठीक है, अब इसको लेके हम क्या करते हैं ना कि जितनी भी फार्म मशीनरी है उसके अंदर दो मॉडल्स पे वर्कआउट करते हैं. एक तो कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, जब आप कोई फार्म इक्विपमेंट खरीदते हो तो आपको अपफ्रंट सब्सिडाइज हो जाता है. दूसरा है सस्ता लोन मिल जाता है. तीसरा है शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट, तो उसके लिए भी सेंटर्स बनाए गए. ठीक है, तो 3 चीजों के ऊपर गवर्नमेंट काम करते हैं बस. ये सब नहीं चाहिए, मूव ऑन, नॉट रिक्वायर्ड. कहाँ पे कौन से ट्रैक्टर कौन से हल चल रहे हैं नहीं चाहिए, इतना डिटेल में नहीं जाना है.
सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए, अपने आप में क्लैरिटी है क्या करने की कोशिश करना है। आगे जाके जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स होंगे ना, उनमें प्लांट क्वारंटीन करना ज्यादा जरूरी होगा टू टेस्ट कि इसका बाकी के फ्लोरा फौना पे क्या इफेक्ट है। देन gender perspective in agriculture, this is the last important chapter of all this. So women in farming, ये GS पेपर 1 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है. Now women farmers, they play an important role in agriculture sector in development of rural economy. Agriculture is the single largest production endeavor in India, contributing substantially to the GDP, and it employs 80% of all economically active women, comprising 33% of agricultural labor force and 48% of self-employed farmers. So these many are there in the agriculture. Okay. Now, women play a significant and crucial role in agriculture development, including main crop production, livestock, horticulture, post-harvest, agro and social forestry, and fishing. So सब जगह active है. Increasing percentage of female operational holders during different agriculture census indicate participation of more and more women in operation and management of agriculture holding in the country. ये बेसिकली फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों शुरू होता है? क्योंकि जो मेल लेबर है वो माइग्रेट कर जाती है अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या और लुक्रेटिव जॉब्स में काम करने के लिए, और घर पे जो फीमेल लेबर रह जाती है उसके ऊपर सारा काम करना पड़ता है उसको. ठीक है. नाउ करंट इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं इसको लेके, हाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क. नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स 2007 included mainstreaming of human and gender dimensions in all farm policies and programs. So तब से हम women के लिए जो कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं in farming also. Current initiatives क्या चल रहे हैं? So there is a national gender resource center in agriculture, and that is taking up the initiatives. First is e-book on success stories and progress of women farmers and agripreneurs. Mahila Kisan Divas 2022, so that is being celebrated. Then millets empowering women and providing nutritional security, that is another area. बस इनके नाम याद रखने की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं. Evidence based gender inequality in agriculture and food systems in India, so this is the book published. Okay. What are the programs that are being done by Department of Agriculture and Farmer Welfare? First is agricultural extension, basically awareness generation, knowledge. So support to state extension programs for extension reforms, ATMA. इसके अंदर क्या क्या करेंगे? Come to this. Under the scheme, the grants, ATMA का full form क्या है? Agriculture Technology Management Agency. So under the scheme, grants and aid is released to states with an objective to support the state government's efforts for revitalization of extension system, basically making people aware about agriculture, making available latest agricultural technologies in different thematic areas, and extension of agricultural activities such as farmer training, demonstration, exposure visit, Kisan Mela, mobilization of farmer groups, setting up of farm schools, ये सारी activities कर रहे हैं. Gender mainstreaming efforts, आत्मा के अंदर क्या क्या है? Minimum 30% of the resources meant for programs and activities are required to be allocated to women farmers and women extension functionaries. Women farmers are to be involved in different decision-making bodies of the district and block level, such as ATMA. Women are represented in the farmers advisory committees at block and district level. Farm women's food security groups at least 2 per block to be formed annually, ensuring household food and nutritional security, providing assistance of rupees 10,000 per group. So ये women friendly schemes शुरू की गई है. Mass media support to agriculture extension scheme, ये भी एक चल रहा है. तो डीडी किसान, हेलो किसान, इन सब के ऊपर किसान की बात ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं. Then establishment of agri clinics and agri business centers. सिर्फ इनका नाम याद रखना, इनकी डिटेल्स नहीं चाहिए. डिटेल्स जो पीछे पढ़ ली बस उतनी चाहिए. Then
The subsidy is 44% in respect of women, SC, ST, and all category candidates from Northeast and Hills, 36% in other categories. तो 20 लाख रुपीस तक का लोन मिलता है ये सारे एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खोलने के लिए. Then extension education institutes. So Ministry of Agriculture, so it has started 4 agricultural extension education institutes at Haryana, Gujarat, Telangana and Assam. स्टेट याद रह जाए स्टेट, नहीं तो प्लेस याद रह जाए तो प्लेस, दोनों तरह से चल जाएगा. Then diploma in agricultural extension services for input dealers, DICE, 1-year diploma है. Then skill training for rural youth, ये बड़ा पुराना 1960s का प्रोग्राम है, आज तक चलता आ रहा है. पहले इसको ट्राइसम बोलते थे. ट्राइबल यूथ के लिए शुरू किया गया था, फिर रूरल यूथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. So training under this component would be for 7 days duration, 15 trainees per batch, focused upon agriculture and allied activities. So vocational development की कोशिश करेंगे, जैसे maybe dairy, maybe honey, maybe whatever they are into. Now agriculture census. Now this is conducted at 5 yearly intervals. अभी हमारे पास लेटेस्ट जो है वो 2017 वाला एग्रीकल्चर सेंसस था, क्योंकि 2022 में नहीं किया गया. तो 2015-16 का एग्रीकल्चर सेंसस क्या बोलता है. अभी हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, अबाउट 14.68. तो इस तरह से वो जो हेक्टेयर्स हैं उनकी वर्कआउट की है. परसेंटेज ऑफ फीमेल होल्डिंग्स, percentage of female operational holdings by size class as per the result of agriculture census 2015-16. Female holdings, then small 13.4, semi-medium 11.76, and all size groups you can just remember 13.97. अब इसका impact क्या है? The increase in percentage of female operational holders during the agricultural census indicates participation of more and more women in operation and management of agriculture holdings in the country. That's it. एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आपने ऊपर पढ़ लिया वही सब यहाँ पे भी, कुछ डिफरेंट नहीं है. फार्मर्स वेलफेयर ऊपर जो पढ़ा वही सब यहाँ पे भी है, नथिंग डिफरेंट. मूव फॉरवर्ड. ये एक तरह से कंक्लूसिव चैप्टर है ना, तो इसमें भी जो जो चीजें आप ऊपर पढ़ के हैं वो सारी कुछ यहाँ पे रिपीट की गई. ठीक है, तो एक ये चैप्टर, एक फर्स्ट चैप्टर, ये कंक्लूसिव से चैप्टर है. So this brings us to the end of this document, जो इसमें से doable workout है. बाकी ये चीजें इतनी खास नहीं है, जो ये audit पैराज ऑब्जर्वेशन ये सब आपको नहीं चाहिए. This finishes our task with respect to this report. कल को हमने अब इसमें से जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए थे वो वर्कआउट करने शुरू करने एग्रीकल्चर के ऊपर. और आपके डाउट्स अगर इस रिपोर्ट को साथ लेके कुछ भी हैं या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो टॉपिक्स आप मेरे को 1 by 1 भेज दीजिए, जस्ट इन केस आपका कोई एरिया वीक है वो भी हम साथ में ले लेंगे कल. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल एंड राइट योर क्वेश्चन.